Yeah, so good afternoon. Today is 15th October 2023, and we are continuing our discussion on Indian Constitution, right? So with respect to this NDA and NA examination, which are scheduled in the month of April 2024 and in the month of September 2024, we are discussing these very important topics. So polity, we started discussion on polity, and we finished earlier making of constitution. Okay, then schedules, parts, right? We have discussed all these things, fundamental rights, directive principles, fundamental duties, etc., etc. We discussed, and then we started discussion on the president. Okay, so with respect to president, what we discussed, that president is having electoral college, right? President is having electoral college, and what is the that electoral college consists of? Elected members of the state legislative assembly, elected members of the parliament, and the elected members of the union territories of Pondicherry and Delhi. Okay, no participation of nominated members in the election college, electoral college of the प्रेसिडेंट. तो जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होते हैं, हमने कहा था. ओके, देन वी डिस्कस द क्वालिफिकेशन फॉर द presidential election. So he should be a citizen of India. He should have attained the age of 35. So the minimum age for the presidential candidate is 35. Okay, then what else? He should be qualified to be elected as the member of the Lok Sabha. लोक सभा के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो क्वालिफिकेशन उसकी होनी चाहिए. Then what else we discuss? So qualification, and then with respect to president, we discuss rest of the things also, like impeachment we discuss, the procedure for the election of the president we discuss, and with respect to that, we discussed that there is a value of the vote of an MLA, value of the vote of an MP. Okay, and finally electoral college, right? So that we discuss, and then with respect to that, with respect to president, we also discuss the oath or affirmation by the president. So who gives oath and affirmation to the president? The Chief Justice of the India. Okay, so if there is if the Chief Justice of the Supreme Court of India is absent, then the senior most judge of the Supreme Court of India, right? Then we also discuss the resignation of the president. So president gives his resignation to vice president. Okay, vice president. So oath is given by Chief Justice of the India, and the resignation by the president is given in favor of the vice president of the India. Then we also discuss violation of the constitution. But what exactly is the violation of the constitution? That is not mentioned. Violation of the constitution is mentioned, but what exactly is the violation of the constitution? मतलब संविधान का अपमान, violation, संविधान का अपमान करना, संविधान का उल्लंघन करना, ये तो दिया है, लेकिन संविधान का उल्लंघन करना मतलब क्या है? That is not discussed in the constitution, right? But with one or other way, we can understand what is the violation of the constitution. संविधान कौन मतलब संविधान का अपमान होना या संविधान का वायलेशन होना मतलब क्या? तो जो चीजें संविधान में है उसके हिसाब से अगर प्रेसिडेंट काम नहीं कर रहे हैं, if presidents are not acting as per the provisions of the constitution, then that can be understood as the violation of the constitution. ठीक है? Then accordingly, when this happen, then what is the procedure? So we discussed yesterday that procedure. कि impeachment charges
can be introduced at which house of the parliament? Okay. अगर impeachment proceedings अगर initiate करनी है तो वो कहाँ पे initiate की जाती है? Either house. Okay, either house, that is either in Lok Sabha or in Rajya Sabha. Okay, so if you get a question ki where is the origin of the impeachment proceeding, so impeachment can be introduced in either house of the parliament. वो ध्यान में रखो. Okay, not necessarily it should be introduced in the Lok Sabha or it should be introduced in the Rajya Sabha. So it can be introduced at Rajya Sabha or in Lok Sabha. Then signing. Okay, for the introduction, how many like what percentage of the members of the Lok Sabha or Rajya Sabha should sign on that proposal? 1/4. Okay, 1/4 members of the Lok Sabha or Rajya Sabha. Okay, wherever that process initiated. And then how many percentage of the people or how many percentage of the members of the Lok Sabha or the Rajya Sabha, wherever that proposal is initiated, so how many members should pass that resolution of impeachment? कितने लोगों ने वो impeachment का provision resolution के साथ पास करना है? 2/3. वो 2/3 पास होने के बाद जैसे ये इधर पास हो गया तो इधर से वो कहाँ पे जाएगा? दूसरे हाउस में. Okay, if that is transferred to the second house, then on the floor of the second house also they need to follow the same practice. That resolution need to be passed by 2/3 of the members, 2/3 of the majority members of the total membership. 2/3 मतलब 66%. तो पहले इसमें 1/4 members है, साइन करना है इंट्रोड्यूस करने के लिए तो 25%. सेकंड इसमें on दोनों सभागृह, okay, in two houses of the parliament, 2/3 resolution need to be passed. 2/3 resolution need to be passed. And on the date on which the resolution in the second house is passed, that date is considered as the impeachment of the President of India. महाभियोग, महाभियोग, ठीक है, महाभियोग और रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया था. Yes, माझा sir. आवाज येतोय? हो सर. क्लियर येतोय? हो सर. ठीक है, ठीक है. या नाउ write down powers and functions of the president. Powers and functions of the president. Executive power. Executive power. EXECUTIV. Executive power. Okay. Write down in that executive. Executive means कार्यकारी अधिकार. EXECUTIV. Executive powers. Okay. So write down. Number 1. All executive actions. All executive actions. All executive actions of the government. All executive actions of the government all executive powers
all executive actions of the government, all executive actions of the government are formally taken in his name. All executive actions of the government, that is government of India, are formally taken in his name. So भारत सरकार के जितने भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं और एक्शंस होते हैं, ओके, सो those actions or those rules that are taken in the name of president. Okay, then write down. He appoints the prime minister. He appoints the prime minister and the other ministers. I am taking somehow in detail. Okay, so on the basis of this, you can understand the state government also. Okay, he appoints the prime minister and other ministers. Okay, he appoints the prime minister and the other ministers. Next, he appoints the Attorney General of India. Attorney General. Who is Attorney General? Anybody? Who is Attorney General? Attorney General किसे कहा जाता है? Attorney General किसे कहा जाता है? Attorney General is the law officer of the government of India. In bracket you can write down. He appoints the Attorney General of India he appoints Attorney General of India and determines his remuneration remuneration, remuneration, and determines his remuneration to stop. The Attorney General, ATTORNEY, Attorney General holds office. The Attorney General holds office during the pleasure of the President. The Attorney General holds office during the pleasure of the President. To stop. Okay, write down. He means Attorney General. He means Attorney General. He is the law officer. He is the law officer, or we can say legal advisor. He is the law officer or oblique legal advisor. That is Attorney General is the legal advisor of the central government. Of the central government. He is the law officer of the central government. Then write down next point. President appoints, next line, next para. President appoints the Comptroller and Auditor General, that is CAG. President appoints the Comptroller, COMP, TROLLER. President appoints the Comptroller, COMP, TROLLER, Comptroller and Auditor General, AUDITOR.
So CAG, in bracket write down CAG, Comptroller and Auditor General of India. So CAG is a person who basically investigate, or CAG office is the office which is investigating the accounts of the different government departments. जो भी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के, वो चेक करने का काम कौन करता है? क्याग का ऑफिस करता है. Okay, for example, if you get into services, if you qualify, so now this is, we are preparing for NDA examination, so you will get into defense forces. Okay, but suppose ये पकड़ लो कि भविष्य में अगर आप डिफेंस में आ गए, डिफेंस से अगर आप सिविल सर्विसेज में आ गए, and in civil services, if you got an opportunity to become Indian account, Indian audit and account services officer, or Indian civil accounts officer, Indian civil account services officer, or defense account services officer. So through Indian Audit Account Services, IAAS, you would get an opportunity to investigate the accounts of the different departments of the government of India, state government. Okay, different collectorates, commissionerates. Okay, उनके पास कितना पैसा गवर्नमेंट में भेजा और उन्होंने कितना पैसा खर्च किया, उसमें क्या लैक्यूनास है, what are the irregularities, and in that way you are getting an opportunity to identify the corrupted practices in the government organizations, right? Okay, so ये CAG का ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. So he appoint the Comptroller and Auditor General of India in bracket CAG, CAG, capital मध्ये. Okay, then bracket close, comma, the Chief Election Commissioner, the Chief Election Commissioner and the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the Chief Election Commissioner and other election commissioners, comma, the chairman and the members of Union Public Service Commission, the chairman and the members of Union Public Service Commission, comma, the governors of states, comma, the chairman and members of Finance Commission, the chairman and members of Finance Commission, and so on. See once again, he appoints the Comptroller and Auditor General of India, the Chief Election Commissioner and other election commissioners, the chairman and members of the Union Public Service Commission, comma, the governors of states, comma, the chairman and members of the Finance Commission, and so on. Ityadi. Then he can seek means he can ask. He can seek any information. He can seek any information relating to, he can seek any information relating to the administration of, he can seek any information relating to the administration of affairs of the union. He can seek any information relating to the administration of affairs of the union and proposals for legislation from Prime Minister. Okay, now keep in mind,
what does this mean? Administration of affairs means what? Administration of affairs of the union. Administration means prashashan, right? Affairs means kamkaj. Of the union means when I use this word union, so union means union government, that is Kendra Sarkar. तो केंद्र सरकार का जो प्रशासन चलता है, उसका जो कामकाज चलता है, उसकी इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है. ओके. एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर. तो व्हाट प्रेसिडेंट कैन आस्क टू द प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को क्या पूछ सकते हैं कि भाई आपका जो कार्यक्रम चल रहा है, मतलब आप जो प्रशासन चला रहे हो, कामकाज चला रहे हो यूनियन गवर्नमेंट की, उससे संबंधित जानकारी मुझे दे. और प्रपोजल्स फॉर द लेजिस्लेशन मीन्स व्हाट? लेजिस्लेटिव ऑर्गन, लेजिस्लेटिव बॉडी मीन्स व्हाट? लेजिस्लेचर, कायदे मंडल. एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी. एग्जीक्यूटिव मतलब एग्जीक्यूट करती है. लेजिस्लेचर कायदे बनाती है. जुडिशियरी, न्यायपालिका. ओके. सो कार्यकारी मंडल, कायदे मंडल और न्यायपालिका. तो प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन मतलब जो लोग, देखो क्या है ना, हमारे देश में जो हमारी सिस्टम है, भारतीय संविधान से जो बनी हुई सिस्टम है, उसमें 3 ऑर्गन्स है. फर्स्ट ऑर्गन इज युअर लेजिस्लेचर, कायदे मंडळ. कायदे मंडळात कसे जाता तुम्ही? खूपदा सांगून झालेलं आहे. मोस्ट ऑफ द टाइम आय हॅव डिस्कस दिस थिंग विथ. हाऊ यू आर एंटरिंग इन टू कायदे मंडळ? हा, कसे जाता कायदे मंडळात? कसे जाता का फिरत 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 फिरत? चलो घूमते 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 चले गए, आ गया कायदे मंडल, चलो घुसो अभी. हाँ, लेजिस्लेचर कसे जाता लेजिस्लेचर मध्ये? हाँ, हाउ यू आर एंटरिंग इनटू लेजिस्लेचर? अरे इफ यू फेल टू अंडरस्टँड व्हॉट डू यू मीन बाय लेजिस्लेचर, कितीदा सांगितलेलं आहे. व्हॉट इज युअर अंडरस्टँडिंग अबाउट लेजिस्लेचर? अरे लेजिस्लेचर मीन्स व्हॉट? कायदे मंडळ म्हणजे काय? अरे यार, ऑलरेडी बेसिक सगळं सांगितलेलं आहे तुम्हाला. हा युगांग, what do you mean by, what is your understanding about legislature? हाँ, पार्लियामेंट का मेंबर मतलब लेजिस्लेचर. तो लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट, मतलब संसद. संसद में क्या है? एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा. राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस, मतलब आप आपके रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनाव के माध्यम से संसद में भेजते हो, लोकसभा में थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन. पाटिल लक्षात येते का? हाँ, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से. ओके. सो यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन राज्यसभा इलेक्शंस. आप लोग राज्यसभा के इलेक्शंस में मतदान नहीं करते हो. सर्वसामान्य जो व्यक्ति होता है, वोटर होता है, वो केवल डायरेक्ट इलेक्शंस में वोट देता है. फिर इसमें से जो चुन के लोग आते हैं उन्हें हम कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. सो लेजिस्लेचर मीन्स पार्लियामेंट एट द यूनियन लेवल एंड लेजिस्लेचर मीन्स विधानसभा, जिसे हम कहते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो यहाँ पे जो लोग जाते हैं उनको हम आमदार कहते हैं. यहाँ पे जो जाते हैं उनको हम खासदार कहते हैं. और जो इन लोगों को चुनाव के माध्यम से चुन के देता है
उसे मतदार कहते हैं। है कि नहीं? ओम, समजलं का? हा, थोडं थोडं समजलं. मतदार कोण? जो गरीब माणूस असतो, जो कधी कधी 500 रुपयात मत विकतो, कधी एका छोट्याशा बाटलीसाठी आपलं मत विकतो, जो कधी 2-3 तंगड्यांसाठी, चिकनच्या मटनच्या पीसेससाठी स्वतःचं मत विकतो, त्या गरीब माणसाला मतदार म्हणतात. काही लोकांची भूक जास्त असते, कुछ लोगों की भूख कम होती है, कुछ लोगों की ज्यादा होती है, कुछ लोग हमेशा मुंह फाड़ के ही रहते हैं, उनको 5 लाख दो, 50 लाख दो कम होता है, कुछ लोगों को झगड़े लगाने के पैसे मिलते हैं. चलो भाई, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, माइनॉरिटीज विरुद्ध मेजॉरिटी, दिस अपर कास्ट विरुद्ध लोअर कास्ट. ये दंगे कब लगाते हैं लोग? जब इलेक्शंस आता है. ये वातावरण खराब कब होता है? जब इलेक्शंस आता है ना? एंड देन दे ऑर्गेनाइज सच कॉन्स्पेरेसीज कि आप उससे, उनके प्रभाव में आके अपने ही लोगों को मारते हो, अपने ही लोगों के खिलाफ काम करते हो, और फिर बहुत ही, मतलब जिनकी औकात नहीं होती है, ऐसे लोगों को आप चुन के देते हो. तो सगळ्यात गरीब कोण आहे? मतदार आहे. You don't send proper persons, you don't send intellectuals, you don't send ethical persons, you don't send responsible, accountable persons in the legislative assembly. You send those persons who are having criminal records, okay, who are mafia most of the time. Okay, I'm not talking about every person. There are good persons also in the politics. Okay, but most of the time we can see that की केसेस असतात. असं नाही फक्त आंदोलन वगैरेच्या केसेस नसतात. वो केसेस हाफ मर्डर के, फुल मर्डर के, रेप के, टॉर्चर के, दंगा फसाद के, लोगों से पैसा वसूल करने के, चीटिंग के, ऐसे केसेस जिनके ऊपर लगे रहते हैं, दे स्टैंड्स फॉर इलेक्शंस. और आप पढ़े लिखे लोग या जो पढ़े लिखे नहीं भी लोग हैं, वो उनको भेजते हो कहाँ पे? संसद में. अब जिसको कुछ अता पता ही नहीं है, जिसको केवल यही सब करना पता है, वो वहां पे क्या काम करेगा? अच्छे लोग भी है, देर आर गुड पर्सन ऑल्सो, देर इज अ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स ऑल्सो, देर इज अ ग्रुप ऑफ दोज पीपल who are studious, who are well qualified, but the percentage is very less. So anyway, parliament, when I talk about legislature, so legislature means your parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, and at the state level there is a Vidhan Sabha which is called as state legislative assembly. इसको आमदार बोलते हैं, इसको खासदार बोलते हैं. ओके, और आपको मतदार बोलते हैं. ये बात ध्यान में रखना. और आपका काम है ईमानदारी से वोट करना, राइट? किसी से पैसा नहीं लेना, किसी से बहकावे में नहीं आना. What is your duty? What should be the role of voter? That voter should understand what is the value of my vote. Because आपके वोट की वैल्यू जो होती है, ये 1 डिश चिकन, 1 डिश मटन, एक खंबा, 1 बॉटल, 2 बॉटल, इतनी नहीं है, इतनी नहीं है. बिकॉज यू आर सेंडिंग these persons to the parliament and to the legislative assembly, so they should have, they need to be sensitive enough about your issues. They should have responsibility, accountability. Okay, they should have a moral character होना चाहिए, है ना? नाही तो फिर गुन्हा दाखल केलेला असतो, महिलेचा विनयभंग केला होता, रेपचा प्रयत्न केला होता, महिलेची छेड काढली होती, असे गुन्हे असलेले लोक निवडणुकीत उभे राहतात. तुम्हाला पैसे वाटतात, घ्या. कधी भेटलंच नाही. खाने को कभी मिला ही नहीं, पीने को कभी मिला नहीं, प्यार ही है. एंड दैट दे आर इन्फ्लुएंसिंग, दैट इज द प्रॉब्लम, right? Anyway, so legislature means this. And what is their
what is their authority then? They participate into the procedure of the parliament and they pass the laws. They pass the laws. बघा आता हे सगळे लोक वेगवेगळ्या, समजा आता तुम्ही 10 पोरं आहात है ना, कोणी इंजिनियर होणार, कोणी सपोज, म्हणजे एक असं हे विचार करा की याच्यातलं कोणी निरक्षर आहे, काहीच शिकलेलं नाही, एकाने 10वी पास केलेली आहे, एकाने ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे, काही लोकांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलेलं आहे, कोणी आर्ट्स आहे, कोणी कॉमर्स आहे, कोणी सायन्सचा आहे, कोणी आणखी कुठल्या इंजिनिअरिंगचा आहे, कोणी मेडिकलचा आहे, राईट. अँड अल्टिमेटली कोणी लॉचा आहे. अल्टिमेटली only out of 50 persons, if only 10% students or 10% member, they are having the knowledge of the law, but 40 members, they don't have knowledge of the law, but still all these people, they are participating into the law making process irrespective of their background. What is their background? तो हमारे देश के कानून कौन बनाते हैं? जिन्हें आप लोग स्टेट असेंबली में, सपोज अभी स्टेट की बात है तो स्टेट असेंबली में, संपूर्ण देश की बात है तो पार्लियामेंट में आप जिनको भेजते हो वो लोग आपके कानून बनाते हैं, और जो लॉज बनते हैं उसे एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव मीन्स व्हाट? कार्यकारी मंडल. तो जो एमपी और एमएलए चुने जाते हैं वही लोग बाद में मिनिस्टर्स बनते हैं. हर मिनिस्टर की एक मिनिस्ट्री होती है. उस मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल हेड होता है वो आईएएस ऑफिसर होता है. उस आईएएस ऑफिसर के अंडर में और आईएएस ऑफिसर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन मिनिस्ट्री है तो फॉर एजुकेशन मिनिस्ट्री the main boss is cabinet minister, okay, but to run the administration under this cabinet minister there is a secretary of that department, and under this secretary there is an additional secretary, okay, then joint secretary, then deputy secretary, then under secretary, and then at different district level, at different tahsil level, there is an entire official administration, or there is an entire administration of those people who are into education department. Okay, but basically what is happening in executive, there are ministers, and in to support the minister there is an entire machinery. ये लोग क्या करेंगे? इन्होंने सपोज एजुकेशन से रिलेटेड कोई लॉ पास किया तो उस लॉ को या उस रूल को या किसी नियम को एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है? एग्जीक्यूटिव. जिस एग्जीक्यूटिव में यहीं पे जो लोग लेजिस्लेचर में है और जो रूलिंग पार्टी में है, दे बिकम द मिनिस्टर्स. Those who are the members of the ruling party, they will get the chance to become ministers. Other defeated party people, they won't get a chance to become a minister. जिनकी पार्टी सत्ता में नहीं है उनके मेंबर्स को मिनिस्टर बनने का चांस नहीं मिलता. तो ये लेजिस्लेचर हुआ, ये एग्जीक्यूटिव हुआ. मतलब लेजिस्लेचर के ही लोग जिस जो पार्टी सत्ता में है वो लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं और फिर उनके अंडर में ब्यूरोक्रेसी होती है. अब इन्होंने कायदे बनाए. These people are executing the laws. Whatever laws framed by legislature and whatever laws implemented by these people, ये ठीक है कि नहीं है, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भारतीय संविधान ने तीसरी विंग बनाई है. That is called as judiciary. That is called as judiciary. Okay, so judiciary मतलब न्यायालयीन व्यवस्था. Okay, judiciary means न्यायालयीन व्यवस्था. You must be knowing, just 2 days back, Supreme Court of India, Chief Justice of the Supreme Court of India, he gave direction to the Speaker of the Legislative Assembly
Okay. So the Chief Justice of the Supreme Court of India, Honorable Dhananjay Chandrachud sir, he gave direction to the Speaker of the Legislative Assembly of Maharashtra, Rahul Narvekar ji, कि बाबा, there is a issue pending with your office related to the qualification or the disqualification of the members of the State Legislative Assembly. आप लोगों को पता है शिवसेना में फुट हुई थी, डिवीजन हुआ था, तो जो डिवाइड होके चले गए तो उनका मेंबरशिप वैलिड है कि नहीं है, ये किसको तय करना है? स्पीकर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट असेंबली. और फिर प्रॉब्लम ऐसी हो रही है कि ही इज नॉट डिसाइडिंग दैट इशू, ही इज नॉट फाइनलाइजिंग दैट इशू. So ultimately what happened, the directions given by the Chief Justice of the Supreme Court, मंगलवार को आपका टाइम टेबल सबमिट करो कि आप क्या करने वाले हो. Because he thought that they are not behaving in a proper manner. They are not behaving as per the norms of the Constitution. And that's why the directions given by the Supreme Court. So what is the utility of Supreme Court? What is the importance of Supreme Court? सर्वोच्च न्यायालय, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस अगर संविधान के विरुद्ध या संविधान के प्रोविजंस के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो सेफगार्ड करने का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जुडिशियरी. इनफैक्ट हाईकोर्ट is having right to give directions to the governments, right? So this is very important. लक्षात आलं तुम्हाला आता? Our entire structure is this only. Our structure is this only: executive, legislature, and judiciary. Okay. चला. Anyway, okay. So write down further. बॉटल क्या करने जाऊ? पाण्याची बॉटल क्या जाऊ? हाँ. So yeah. So legislation from the proposals for legislation from the Prime Minister means what? की इथे म्हणजे पार्लमेंट मध्ये जे काही लेजिस्लेशन करायचे आहेत ते कुठले आहेत तर त्याचे प्रपोजल्स काय आहेत बाबा? सपोज महिलाओं के विषय पे कुछ कायदा बनाना है, स्टूडेंट्स के एजुकेशन के ऊपर कुछ कायदा बनाना है ना, हायर एजुकेशन पे कुछ कायदा बनाना है और कुछ, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल इन महाराष्ट्र देयर इज अ इशू ऑफ मराठा रिजर्वेशन, राइट? सो इफ सपोज इन स्टेट गव्हर्नमेंट, आता हेच कसं होईल विथ रिस्पेक्ट टू गव्हर्नमेंट, कसं म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट असेंब्ली कसं होणार माहिती आहे का? विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट, instead of president, if you are studying governor, so governor is having same power with respect to respective state. Governor will ask about the administration of the state government to whom? Chief Minister. Government will ask the proposals of legislation to whom? Chief Minister of the respective state. Suppose महाराष्ट्र है, suppose अभी मराठा रिजर्वेशन का इश्यू चल रहा है, तो मराठा रिजर्वेशन के इशू के संदर्भ में
अभी देखो उसको, वो देखो आप लोगों को आपके एज के हिसाब से पता नहीं मुझे आप लोगों को इतना समझता है, बट विथ टू make them eligible for the reservation, for the आरक्षण, what is important? To pass a law. And to pass a law, what is important? To propose a bill for the Maratha reservation on the Assembly of Maharashtra. महाराष्ट्र के विधानसभा में उसके बारे में प्रपोजल लाना होगा। तो सपोज महाराष्ट्र के विधानसभा में ऐसा अगर प्रपोजल आता है तो गवर्नर उसकी इंफॉर्मेशन किसको मांगेगा? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, बिकॉज मराठा रिजर्वेशन इज नॉट अ इश्यू ऑफ कंट्री, इट इज अ इश्यू ऑफ महाराष्ट्र स्टेट, राइट? इट इज अ इश्यू ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओनली। ठीक है, तो हे समजतंय तुम्हाला, लक्षात येत आहे? सो दिस इज व्हेरी इंपॉर्टंट, राइट? याच्यानंतर कुठेही कन्फ्युजन नाही व्हायला पाहिजे. ओके, सो he can seek any information relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation from the prime minister. Then write down, he can appoint a commission. Write down further, fatapat liya. He can appoint a commission to investigate. He can appoint a commission to investigate into. He can appoint a commission to investigate into the conditions of scheduled caste, scheduled tribes, scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes. Scheduled caste, scheduled tribes, and other backward classes. नेक्स्ट राइट डाउन. देखो, तो ये कमिशन मतलब क्या है? आयोग. कशासाठी? टू इन्व्हेस्टिगेट इनटू द कंडिशंस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड द अदर बैकवर्ड क्लासेस. सो हमारे देश में जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जमाती है और अदर बैकवर्ड क्लासेस है, जो ओबीसी हम कहते हैं, उनकी कंडीशन, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, उनकी सोशल कंडीशन कैसी है, उनकी एजुकेशन कंडीशन कैसी है, उनकी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ही कैन अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द into the conditions of SCs, STs and the other backward classes. Next, he can appoint an interstate council. He can appoint an interstate council to promote. He can appoint an interstate council to promote center state and interstate cooperation. He can appoint an interstate council to promote center state and interstate cooperation. So what does it mean? Interstate council. What do you mean by interstate? State to state. Interstate means state to state. 2 राज्यों में, 3 राज्यों में. He can appoint a commission, he can appoint an interstate council, मतलब राज्यों की council, राज्यों की परिषद, to promote center state, केंद्र और राज्य, एंड इंटरस्टेट कोऑपरेशन. ओके, मतलब देखो कि सपोज मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये 4 राज्य है, या गुजरात, 5 राज्य, उनकी अगर एक परिषद बन गई तो ये परिषद से क्या होगा? सपोज 2 या 3 स्टेट्स है और उन 3 स्टेट्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहे हैं. तो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो वो सॉल्व करने के लिए उनकी एक परिषद चाहिए, उसमें चीफ मिनिस्टर्स रहेंगे, एंड दे विल सॉल्व द इशू विथ नेगोशिएशंस. नेगोशिएशन मीन वो एक दूसरे के साथ बात करेंगे,
बोलेंगे चलो एक दूसरे के साथ अच्छे विचार रख के और डायलॉग रख के हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं. तो व्हॉट विल हॅपन इन्स्टेड ऑफ टेन्शन्स. जसं आता समजा तुमच्या घरात भांडणं झाले, होतात ना कधी कधी, शेतीच्या वादातून भांडणं, हा भावाभावात भांडणं, रक्षाबंधन भाऊबीज सेलिब्रेट करतात लोक, आणि ज्यावेळेस बहिणीच्या हिश्श्याचा प्रश्न येतो त्यावेळेस भाऊ म्हणतो की देणार नाही, किंवा काकू करतो. काकू करणे म्हणजे काय, निग्लिजन्स, अरे इसको क्या जरूरत है वगैरे वगैरे. हा आहे की नाही आपल्या इकडे, है ना, असं आहे. मग दोन पार्ट्या बसतात घरातले लोक, मग नवरा बायकोचं भांडण झालं, नवीन नवीन कपल आहे, लग्न झालं. हा ते मुलगी म्हणते की नवरा असाच करतो तसाच करतो, घरचे असेच करतात तसेच करतात, सासरचे बरोबर नाही, सासरचे म्हणतात हे पोरगी तुमची बरोबर नाही. मग प्रकरण ते येतं ते याच्यावरती, है ना, युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते. युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होते. युद्धजन्य म्हणजे कसं, आता इस्रायल पॅलेस्टाईन मध्ये नाही का वॉर सुरू आहे, तर एकदम खतरनाक परिस्थिती डेव्हलप होते. हा ते मुलगी म्हणते मी आता इथं राहतच नाही. हा आणि ते तिकडले मग ते हमरी मग मधले लोक येतात, शांततेचा मार्ग, बाबा काय प्रॉब्लेम आहे, मध्यस्थ येतो ज्यानं जुडवून दिलेलं असतं, 4 लोक घेऊन येतात, इकडून ते इकडून ते, आणि मग they try to manage the affair, they try to solve the issue with the negotiations, with the interactions. खूप हसतो ओम तू, पायशीला भविष्यात, नाही तर मला यावं लागेल तुझा मुद्दा सॉल्व्ह करायला. ओके, सो दे ट्राय टू सॉल्व्ह द प्रॉब्लेम्स शांततेच्या मार्गाने. काय अल्टिमेटली की इन्स्टेड ऑफ, जसं आता तुम्ही म्हणजे कसं की एकदम ताणण्यापेक्षा काय, बाबा चला कुठेतरी आपण शांततेच्या मार्गाने सॉल्व्ह करायचा प्रश्न. ओके, सो लाईकवाईज we try to solve our homely affairs with the negotiations. So likewise, the same thing is applicable to the nation, the same thing is applicable to the state. If you are fighting with each other, then there is no solution. आपण भांडत राहिलो तर सोल्युशन नाही. पण आपण एकमेकांना विश्वासात घेतलं, है की नाही, विश्वासात घेतलं, सांगितलं, बताया कि नहीं यार ये ऐसे प्रॉब्लम, इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक काम कर, मैं 2 कदम पीछे तू 2 कदम पीछे, कुछ ना कुछ उसमें से. Okay, so that is a policy to run the administration also, to run the state also, to run the country also. And that's why in India like country there is a need of interstate council. Interstate, राज्य राज्य नाही. जसे कर्नाटक आणि महाराष्ट्र आहे, मध्ये मध्ये तुम्हाला माहिती असतं की लगेच भांडणं सुरू होतात. हा ते जे वादग्रस्त ठिकाण असतात ना, मराठी भाषिक आणि कन्नड भाषिक, तिथे लगेच हाणामारी सुरू होते, बरोबर. आणि त्याच्यात तेल ओतायचं काम कोण करतं, आपले, तुम्ही डोक्यावरती नाचून, तुम्ही डोक्यावरती ज्यांना बसवलेले आहेत ते पॉलिटिशियन्स, ते तेल टाकण्याचं काम करतात त्याच्यामध्ये. नाही 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 नाही, मराठी भाषेचा अपमान सहन केला जाणार नाही, ते म्हणतात की कन्नड वाल्यांचा अपमान सहन केला जाणार. झालं की काय, भांडणं सुरू, बसा फोडा, बसेस फोड, हमले करा एकमेकांवरती. अरे काय, like we are fighting on the issues of language, we are fighting on the issues of caste, we are fighting on the issues of religion. What nonsense we are doing. We forget to understand that we are living in a country, the name of that country is India or the Bharat, right? And when it comes to the war against the Pakistan, so that time, आता जशी मॅचेस होती की नाही परवा काल, तर त्यावेळेस कसं आपल्याला चाललं होतं एकदम जोश, खतरनाक बिलकुल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान. त्यावेळेस कसे तुम्ही सगळे इंडिया जितेगा, इंडिया इंडिया इंडिया, तेव्हा नाही कन्नड, तेव्हा नाही महाराष्ट्रीयन, तेव्हा नाही गुजराती. मग हे प्रॉब्लेम झाले की तुम्ही काय म्हणता, गुजराती, कन्नडा, तेलुगू, तमिळ,
हिंदी भाषिक, मराठी भाषिक, फालतूगिरी है कि नहीं, है ना? So that's why the interstate council is important, and because of this interstate council, there is a possibility of the good relations between center and the state. Chala, yeah, okay. So he can appoint a commission to investigate. Sorry, he can appoint an interstate council to promote center-state and interstate cooperation. Then write down. He directly administers. He directly administers the union territories. He directly administers the union territories through administrators appointed by him. Through administrators appointed by him. He directly administers the union territories through administrators appointed by him. तो जैसे जो यूनियन टेरिटरीज है केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक होते हैं जिन्हें कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर्स, तो उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है? देन he can declare any area, as scheduled area. He can declare any area as scheduled area and has powers with respect to the administration of scheduled areas and tribal areas. He can declare any area as a scheduled area and has powers with respect to the administration of scheduled areas and tribal areas. Okay, scheduled area म्हणजे काय तर अनुसूचित क्षेत्र. एखादा एरिया असतो, एक कोई एरिया होता है, उस एरिया को अनुसूचित क्षेत्र वो डिक्लेयर कर सकता है and has power with respect to the administration of the scheduled areas and the tribal areas. मतलब कुछ criterias है, on the basis of those criterias he can declare specific area as a scheduled area. And the another important thing is that he can, like, he is administering the tribal areas also. Tribal areas means what? Where there is a huge population of the tribes. आदिवासी माहिती है तुम्हाला? ओके, सो जो आदिवासी होते हैं, जहां पे आदिवासियों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन होती है, उस एरिया को एडमिनिस्टर वो करता है, ठीक है? नेक्स्ट राइट डाउन लेजिस्लेटिव पावर्स. तो दिस वर द एग्जीक्यूटिव पावर्स. ओके, दिस वर द एग्जीक्यूटिव पावर्स, कार्यकारी अधिकार. नाउ राइट डाउन लेजिस्लेटिव पावर्स. Legislative powers. He can summon, SUMMON. He can summon मतलब बोलावने. Okay, to call. Summon means to call. He can summon or prorogue, PROROGUE. प्रोर्यूग मतलब खंडित करना, डिसकंटिन्यू करना. ठीक है, समन मतलब बुलाना. ओके, आओ. प्रोर्यूग, डिसकंटिन्यू. ओके, ही कैन समन SUMMON और प्रोर्यूग PROROGUE the parliament and dissolve DISSOLVE, dissolve,
डिसॉल्व मतलब बर्खास्त करना. एंड डिसॉल्व द लोकसभा. एंड डिसॉल्व द लोकसभा. स्टॉप. देखो वो क्या करता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, वो लोकसभा जो है उसके सेशन को, अधिवेशन को बुलाता है. ओके. या फिर उसको खंडित करता है. खंडित मतलब टाइम बिंग के लिए डिसकंटिन्यू करना. और डिसोल्यूशन मतलब परमानेंटली. डिसोल्यूशन परमानेंटली. ठीक है. सो डिसॉल्व द लोकसभा. ही कैन ऑल्सो समन. He can also summon a joint sitting. Joint sitting means what? संयुक्त. संयुक्त सभा, संयुक्त बैठक. Joint sitting. Sitting means बैठक. Joint means संयुक्त. Okay. He can also summon a joint sitting of both the houses of parliament. He can summon a joint sitting of both the houses of parliament, which is presided over by, which is presided over by which is presided over by the Speaker of the Lok Sabha. Which is presided over by the Speaker of the Lok Sabha. Okay. So joint sitting. Joint sitting means what? संयुक्त बैठक. ठीक है. आणि joint sitting बोलावतो कोणी? You may get a question. Who call a joint sitting? President. Who preside the joint sitting? Speaker of the Lok Sabha. Speaker of the Lok Sabha. ठीक है. Then write down. He can address the parliament. संसदेला तो अभिभाषण करतो. अभिभाषण करतो. He can address the parliament at the first session. He can address the parliament after. He can address the parliament at the first session after each general election. He can address the parliament at the first session after each general election and the first session of each year. And the first session of each year. So, he can address the parliament at the first session after each general election. Okay, means commencement of the first session after each general election and the first session of each year. See, every year there are 3 parliamentary sessions. प्रत्येक वर्षी हर साल पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं. एक होता है आपका बजट सेशन, दूसरा होता है आपका ये रेनी सीजन में आता है. ठीक है, पावसाळी अधिवेशन. थर्ड इज विंटर सेशन. ओके, बजट सेशन. देन another is your session during the rain. Okay, and the third session is winter session. हिवाळी अधिवेशन त्याला म्हणतात. और इन बिटवीन छोटी छोटी गैप्स होती हैं. ओके, 4 months, 3 months, 2 months, like this. Okay, so compulsory there are 3 sessions. Compulsory there are 3 sessions. State assembly में भी वैसे ही होता है normally, and then parliament also. Now, so the first session is budget session. उसमें प्रेसिडेंट का अभिभाषण होता है. तो हर साल में 3 सेशन होते हैं. तो हर साल में एक सेशन, ओपनिंग सेशन जो फर्स्ट सेशन होता है, दैट टाइम प्रेसिडेंट एड्रेस टू द पार्लियामेंट एंड means it means that if the government continue for the 5 years, then there are compulsory 5 sessions of president and one session. One session कुठलं असतं?
he can address the parliament at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year. Okay. So when there are elections, म्हणजे इलेक्शन झालं आणि इलेक्शन नंतरचं जे फर्स्ट सेशन आहे त्याला ऍड्रेस करतो आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सेशनला इलेक्शन नंतरचं जे पहिलं सेशन होतं, सपोज आता इलेक्शनच्या डेट काही सांगता येत नाही, कुठल्या डेट्स असू शकतात, मध्ये पण केव्हा पण इलेक्शन होऊ शकतं आणि त्याच्यानंतर पहिलं सेशन होऊ शकतं. तर त्या पहिल्या सेशनला तो ऍड्रेस करतो आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सेशनला ऍड्रेस करतो. ओके, तर हे लक्षात ठेवा, कीप इन माइंड की in every 5 year, the first session and the first session of the every year, right? So same is applicable to governor of like president. When we are discussing president, so parallelly governor is important. When we are discussing prime minister, so parallelly chief minister important. Whenever we are discussing council of minister, parallelly the council of minister of the state is also important. Okay, then write down. He can send messages. He can send messages to the houses of parliament. He can send messages to the houses of parliament. He can send messages to the houses of parliament, whether WHETHER, whether WHETHER, with respect to a bill, whether with respect to a bill pending in the parliament or otherwise. He can send messages to the house of parliament whether with respect to a bill pending in the parliament or otherwise. Okay. Okay, then write down. He can appoint any member of the Lok Sabha. He can appoint any member of the Lok Sabha to preside over its proceedings. Proceedings म्हणजे त्यांचा जो कामकाज जो असतो तो. He can appoint any member of the Lok Sabha to preside, PRESID, preside over its proceedings. Proceeding means kamkaj. Proceedings when the offices of both the speaker, and the deputy speaker, he can appoint any member of the Lok Sabha to preside over, PRESID, to preside over its proceedings, PRO, CEEDINGS, proceedings, when the office of both the speaker and the deputy speaker fall vacant. When the offices of both the speaker and the deputy speaker fall vacant. Vacant म्हणजे रिकामे होने. जब लोकसभा का स्पीकर मतलब चेयरमैन मतलब सभापति और डेप्यूटी स्पीकर मतलब उपसभापति जब दोनों छुट्टी पे रहते हैं, जब दोनों काम पे नहीं रहते, जब दोनों किसी ना किसी कारण से नहीं रहते हैं, तो प्रेसिडेंट लोकसभा के किसी भी व्यक्ति को प्रिसाइड करने के लिए अपॉइंट कर सकता है. सेम इज अप्लीकेबल टू द राज्यसभा. जब राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरपर्सन या डेप्यूटी चेयरपर्सन प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो राज्यसभा के किसी भी मेंबर को राष्ट्रपति उस व्हाट यू कैन से उस राज्यसभा का चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम बीइंग के लिए. ओके, सो दैट इज फॉर द टाइम बीइंग. ओके, सो राइट डाउन. सेम इज अप्लीकेबल टू द राज्यसभा. Same is applicable to the Rajya
Sabha. Then write down. Now this is very regular. Information with respect to president. He nominates 12 members. He nominates 12 members of the Rajya Sabha. He nominates 12 members of the Rajya Sabha. He nominates 12 members of the Rajya Sabha from amongst AMONGST, from amongst persons. He nominates 12 members of the Rajya Sabha from amongst persons having special knowledge or practical experience. He nominates 12 members of the Rajya Sabha from amongst persons having special knowledge or practical experience in a literature और practical experience in literature. Literature मतलब साहित्य, कॉमा साइंस मतलब विज्ञान, कॉमा आर्ट मतलब कला, एंड सोशल सर्विस समाज सेवा. See, he nominates 12 members of the Rajya Sabha from amongst persons having special knowledge or practical experience in literature, science, art and social service. तो ध्यान में रखो 12 जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, जिन्हें विशेष ज्ञान या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विशेष ज्ञान और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस. ऐसा बैकग्राउंड जिन लोगों का है, कौन से फील्ड है? लिटरेचर साहित्य, साइंस विज्ञान, आर्ट कला एंड देन सोशल सर्विस समाज सेवा. ऐसे जो 4 फील्ड्स है, ऐसे 4 फील्ड के पर्सन्स, 12 पर्सन्स, लेकिन उनको क्या होना चाहिए? स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. सपोज स्पेशल नॉलेज और practical experience. So practical experience means what? Sachin Tendulkar is playing cricket. So Sachin Tendulkar is having practical experience. Okay. हाँ, अब सचिन तेंदुलकर का जो फील्ड है वो स्पोर्ट का है, लेकिन सचिन तेंदुलकर को राज्यसभा में लिया गया था और सबसे ज्यादा एब्सेंट रहने वाला सचिन तेंदुलकर था. समझे? उसको लिया गया था स्पोर्ट्स से. चलो उसके ऊपर बात नहीं करेंगे. अब काफी सारी एक्ट्रेस, ड्रीम गर्ल कोण आहे? ड्रीम गर्ल कोण होती आधीच्या जमान्यातली? किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल. कोण होती? हा, अरे ड्रीम गर्ल कोण होती? अरे तुला काय माहिती? म्हणजे वा रे वा. कोण होती रे चित्राक्ष ड्रीम गर्ल? अच्छा, तो शक्तिमान माहिती है क्या तुम्हाला? ये फिल्म इंडस्ट्री का जो आयरन मैन था वो था धर्मेंद्र. धर्मेंद्र की ड्रीम गर्ल कौन थी? हेमा मालिनी. हेमा मालिनी माहिती है ना? सनी देओल माहिती है का? तारीख पे तारीख. हाँ, माहिती है डायलॉग सनी देओल? हाँ. So Hema Malini was a dream girl. She was also a member of the Rajya Sabha. Your Gana Kukida, Lata Didi, she was also the member of the Lok Sabha. Sorry, Rajya Sabha. And then so many persons, they got appointment. They got backdoor appointment to the Rajya Sabha because they were associated with literature, science, art, सोशल सर्विस. तो ये जितने भी फिल्म इंडस्ट्री वाले आते हैं, अपनी रेखा
रेखा को देखा मैंने, हेमा को देखा। हाँ, रेखा माहिती है ना? एक ही बार रेखा मैडम जो है वो राज्यसभा में गई अटेंड करने के लिए, तो जितने भी पॉलिटिशियंस थे वो रेखा को ही देखने लगे। कुछ साल पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है। रेखा एकदाच गेली आणि ह्या वयात सुद्धा रेखाला बघायला सगळे खासदार आले. सगळे तिच्यासोबत फोटो गिटो काढायला. तर हे लोक कसं असतात कि मुझे देखो और फुल बरसाव वाला काम होता है. इन मराठी मले पहा आणि फुलं वहा. हाँ, तो इनका काम होता है कि बाबा कभी कभी आ जाना राज्यसभा में दिखाने के लिए, और फिर हमारे लोग फिर उनके साथ फोटो निकालते हैं, क्योंकि ये कभी कभी आते हैं. Basically, what is the logic behind appointment of these persons? सोशल सर्विस वाला अगर रहता है तो अच्छी बात है, बिकॉज ही आर हैविंग सम सोशल कॉन्शियसनेस. Suppose you must have heard the name of Baba Amte, you must have heard the name of Dr. Amte, you must have a name of those persons who did some great contribution for the upliftment of the women, upliftment of the tribes, upliftment of the backward communities, upliftment of the minorities, upliftment of the वर्कर्स, एग्रीकल्चरिस्ट वगैरह वगैरह. तो जिनका प्रैक्टिकल काम है समाज सेवा का, उनको अगर आप खासदार बनाते हो, राज्यसभा में अपॉइंट करते हो, तो चलो 10 लोगों का भला होगा, कुछ लोगों का भला होगा. अब आप किसको भेजते हो? जो कभी कभी जाते हैं उनको भेजते हो, तो उससे कितने लोगों का भला होगा? अच्छा, जो फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करने वाले हैं, एक्टर और एक्ट्रेस, वो तो बहुत पेमेंट लेते हैं. To sign one picture, one movie, they charge in crores. Those who are very famous actor and actress. तो उनको भेजने की कोई जरूरत होती है क्या? लेकिन भेजा जाता है, कला के क्षेत्र को स्कोप मिलना चाहिए. लेकिन ये चेहरा दिखाने के लिए कभी कभी वहां पे जाते हैं, और वो कभी कभी जाने के बाद भी लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं. ओके, सो इन अवर माइंड वी हैव व्हाट इज अवर प्रॉब्लम. हम लोगों ने ऐसे लोगों को सर पे चढ़ा के रखा है. राइट. एनीवे, आप लोगों का एज कम है, इसलिए आपको ये बातें समझेंगी नहीं. देन लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस. तो स्पेशल नॉलेज होना चाहिए या फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. स्पेशल नॉलेज. अभी लिटरेचर में दो तरह के लोग होते हैं. एक तो जो लिखते हैं वो, उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. और स्पेशल नॉलेज मतलब लिटरेचर के प्रोफेसर्स. राइट. साइंस में भी दो तरह के लोग हो सकते हैं. एक तो बहुत ही अथॉरिटिव पर्सन हु इज हैविंग नॉलेज ऑफ द साइंस, और दूसरे कि उसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करने वाले, मतलब साइंटिस्ट होते हैं. ठीक है. तो अंडर दिस बैकग्राउंड, दोज हु आर हैविंग दिस बैकग्राउंड, सो दे कैन गेट अपॉर्चुनिटी टू एंटर इनटू द राज्यसभा. एंट्री इनटू द राज्यसभा इज कॉल्ड एज अ बैकडोर एंट्री. ये ध्यान में रखो. और राष्ट्रपति कितने लोगों को भेज सकता है? 12 लोगों को. ठीक है. ही कैन नॉमिनेट. अच्छा, ये कैंसल हो गया, ये कैंसल होगा नॉमिनेशन ऑफ एंग्लो इंडियन. छोड़ दो. ही डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस. He decides on questions as to disqualifications. He decides on questions as to disqualifications of members of the parliament. He decides on questions as to disqualifications of members of the parliament. है ना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन का अगर कुछ प्रश्न रहा तो उसको डिसाइड कौन करता है? प्रेसिडेंट. ओके. इन जैसे राज्य में, हमारे राज्य में अभी डिसाइड कौन कर रहे हैं? स्पीकर. है ना, ये स्पीकर वाली बात होगी. तो स्पीकर की जो बात है वो अलग बात है, उसके लिए अलग ये होता है. और ये इन जनरल जो है वो थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. He decides on question as to disqualifications of the members of parliament in consultation with the election commission. In consultation with the election commission.
Next item. He can given he can give his assent. He can give his assent. Assent मतलब अनुमोदन देना. Okay, sanction देना. He can give his assent, ASSENT. To he can give his assent, ASSENT. Assent मतलब उसको sanction करना, pass करना. To the state bill. To the state bill. Or cannot give his assent or cannot give his assent to the state bill which is sent to him by the governor, which is sent to him by the governor, Okay. आता वाचा सगळं. Whatever I have given, just read out once again. Then we shall move further. Read whatever I have given till now. Read करा 1-2 मिनिटं. Okay, चला पुढे लिहा. Next, write down. He can promulgate ordinances. Promulgate, PROMULGATE. Promulgate, PROMULGATE. He can promulgate ordinances. He can promulgate ordinances when the parliament is not in a session. He can promulgate ordinances. He can promulgate ordinances when the parliament is not in a session. तुमचं एंटरटेनमेंट होते ना जेव्हा असले की. He can promulgate ordinances when the parliament is not in a session. These ordinances, आता हे लिहा नंतर मी सांगतो. These ordinances, ORDINANCES, ordinances. मी सांगतो तुम्हाला what is ordinance. These ordinances must be approved by the parliament. These ordinances must be approved by the parliament within 6 weeks. Within 6 weeks from its reassembly. Within 6 weeks from its reassembly. He can also withdraw. He can also withdraw an ordinance. He can also withdraw an ordinance at any time. He can also withdraw an ordinance at any time. Now see it carefully. He can promulgate
ordinances when the parliament is not in a session. मैं बता रहा हूं ना अभी। ऑर्डिनेंस मतलब क्या होता है, इसको मराठी में हिंदी में कहा जाता है अध्यादेश। प्रोमुलगेट करना मतलब क्या, जारी करना। जारी करना मतलब एग्जीक्यूट करना। ही कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस when the parliament is not in a session. So what I have told you earlier कि सेशंस होते हैं ना पार्लियामेंट के, राइट। व्हाट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि पार्लियामेंट है, संसद है, तो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं। नॉर्मली आई हैव डिस्कस विथ यू दैट देयर आर 3 सेशंस। और मैंने कहा था कि एक अपना बजट होता है, दूसरा फिर एक रेनी वाला होता है, और तीसरा फिर विंटर वाला होता है। तो बेचारे अभी ये जो हमारे बहुत मेहनत लेने वाले जो पॉलिटिशियंस है, हमारे एमपी एमएलए है, जो बहुत हमारे देश के लिए, राज्य के लिए इतना कष्ट लेते हैं, है ना, इतना बोझा उठाते हैं, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अमिताभ बच्चन तो मूवी कुली मधलं गाणं होतं, ए कुली, तो हे तसेच कुली आहेत बिचारे, राइट। तो उनको थोड़ा सा तो विश्रांति चाहिए ना। दे नीड सम गैप इन बिटवीन। सम गैप ना चाहिए ना, उनके भी बीवी बच्चे होते हैं, हाँ, उनको भी घर के काम करने होते हैं, उनको भी कभी ड्रामा देखना जाना होता है, कभी मूवी देखने जाना होता है, तो कुछ ना कुछ तो काम करते हैं ये लोग, राइट। तो इन बिटवीन ये सेशंस के बीच में थोड़ी थोड़ी गैप्स होती है, जिस समय सेशन नहीं होता है। तो जब सेशन नहीं होता है, तो जब असेंबल नहीं होगा, जब संसद का सेशन नहीं होगा, विधानसभाओं का सेशन नहीं होगा, मतलब विधानसभा फॉर द स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जब ये सेशन नहीं होंगे तो कानून पास नहीं हो सकता है। ओके, कानून पास नहीं, बिकॉज कानून पास करने के लिए फॉर द टू पास द लॉज, सेशंस आर required. To pass the laws, sessions are required. Now what happens? If there is no session, then there is an urgent need on some issue to pass some legislation or to enact some law. अभी लॉ कौन पास करता है? पार्लियामेंट फॉर द एंटायर नेशन। स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट के लिए। तो यहाँ पे कोई अर्जेंट अगर इशू आता है तो प्रेसिडेंट प्रोमुलगेट दैट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब होता है अध्यादेश। इट इज एज गुड एज लॉ। प्रोमुलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस मीन्स इट इज एज गुड एज लॉ। उसका इंपॉर्टेंस लॉ का ही होता है, वह एक प्रकार का कानून होता है। तो ये कब कर सकता है? व्हेन देयर इज नो सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट के सेशन होते हैं तो प्रेसिडेंट कैन नॉट प्रोमुलगेट एनी ऑर्डिनेंस। जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता तो प्रेसिडेंट इज हैविंग पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। सेम इज एप्लीकेबल टू द गवर्नर। व्हेन देयर इज नो सेशन ऑफ द असेंबली एट द स्टेट लेवल, then governor is having authority to promulgate the ordinance for the state. राज्य के लिए ऑर्डिनेंस पास करने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को, गवर्नर, हर राज्य के गवर्नर को। एंड फॉर द एंटायर नेशन प्रेसिडेंट। कब? जब इनकी छुट्टियां चालू होती है तब, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट? दीज ऑर्डिनेंसेस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ये ऑर्डिनेंस पारित होने के बाद इसको पार्लियामेंट ने अप्रूव करना चाहिए। कितने दिनों में? 6 वीक्स। 6 वीक्स मतलब कितने दिन? 42 डेज। 7 सकम 42, 7 6 42, 7 वीक्स, 6 वीक्स मीन्स 7, 1 वीक consists of 7 days, so 7 6 42. In examination they can mention how many weeks? 6 weeks. How many days? 42 days. लक्षात आलं? ओके, सो 6 weeks फ्रॉम इट्स रीअसेंबली। तो जब पार्लियामेंट फिर से गठित होता है, फिर से जब उसकी असेंबली होती है, तो असेंबल होने के 6 weeks में या 42 days में वो जो ऑर्डिनेंस पास किया था उसको सैंक्शन करना आवश्यक होता है
These ordinances must be approved by the Parliament within 6 weeks from its reassembly. He can also withdraw an ordinance at any time. So he is having power to withdraw ordinance at any time. Okay. Then write down next point. Next point. He lays the reports of Comptroller and Auditor General. He lays म्हणजे ठेवणे मांडणे. He lays the reports of Comptroller and Auditor General, comma, Union Public Service Commission, comma, Finance Commission. He lays the reports of the Comptroller and Auditor General. Comptroller, COMPTROLLER, Comptroller and Auditor General, comma, Union Public Service Commission, comma, Finance Commission, and others before the Parliament. Okay. आता बघा, एक प्रेसिडेंटची एक महत्वाची गोष्ट असते. व्हॉट इज द अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट? When you get a question, what is Parliament? Parliament consists of what? I have already told you. Parliament consists of what? Lok Sabha and Rajya Sabha. But other than that, the integral part of the Parliament is President. Why President is the integral part of the Parliament? Because I have already told you that there is a law making process. लॉ कैसे बनते हैं? एक वर्ड है बिल. बिल इसको कहा जाता है विधेयक. ओके. और ये बिल के ऊपर, विधेयक के ऊपर जब लोकसभा में चर्चा होती है, लोकसभा में चर्चा होने के बाद वो पास होता है, देन इट सेंड टू द राज्यसभा और वाइस वर्सा. ओके. देन यहाँ पे पास होता है, यहाँ पे पास, वहां पे पास, फिर वो कहाँ पे जाता है? प्रेसिडेंट के लिए. और जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट उसके ऊपर अपनी मोहर मतलब सिग्नेचर करता है. जब तक प्रेसिडेंट की सिग्नेचर नहीं होती तब तक उस बिल का रूपांतर लॉ में नहीं होता. सो अनलेस एंड अनटिल द प्रेसिडेंट पुट हिज सिग्नेचर ऑन दिस बिल, देयर इज नो कन्वर्जन ऑफ दिस बिल इनटू law. So President is an integral part of the Parliament, Lok Sabha, along with Lok Sabha and Rajya Sabha, and whatever the bill introduced and finally pass on the floor of the Lok Sabha and on the floor of the Rajya Sabha. So that bill need to be passed, approved, and sanctioned with the signature by the President. Then only we can call that bill as the law. So the most important process or the most important role of the President played in the process of legislation is approval of President, signature of the President, and conversion of a bill into law. तो दो तीन बातें इसमें है कि जब बिल प्रेसिडेंट के पास आता है तो प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है. सो फर्स्ट थिंग, ही गिव हिज एसेंट टू द बिल. एसेंट मतलब क्या? सैंक्शन दे देता है कि चलो भाई दे दिया. दूसरा, विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, मतलब वो अपनी जो एसेंट है मतलब सैंक्शन जो है वो विथहोल्ड करके रखता है कि नहीं करना है, फिलहाल नहीं करना है, बाद में देखेंगे. फर्स्ट इज ही गिव्स हिज एसेंट टू द बिल. सेकंड, withhold his assent to the bill. Third, return the bill if it is not a money bill. अगर मनी बिल आता है उसके सामने तो मनी बिल को एसेंट वो देता है. ओके, मनी बिल को वो एसेंट देता है. बट अगर इफ द बिल इज नॉट अ मनी बिल, ओके, इफ द बिल इज if the bill is a money bill, he give his assent. And for the other bill, he can return the bill for reconsideration of the Parliament. For the reconsideration of the Parliament. अगर एक दिन देना. हाँ. Okay. So this is a process with respect to the bill making. Okay. This is a process with respect to the bill making. Okay. So write down.
Write down last point of today's discussion. Okay, so write down. When a bill is sent to the when a bill is sent to the president, when a bill is sent to the president, when a bill is sent to the president, तुम्ही घ्या. After it has been passed by the parliament, after it has been passed by the parliament, comma, he can number one, give his assent to the bill, assent to the bill. Assent means sanction. Assent, ASSENT, assent means sanction. Assent to the bill. Number second, withhold. Hold करून ठेवणे. Okay, withhold his assent to the bill. Or number three, first assent देतो, second withhold ठेवतो, third or third written the bill in bracket write down, if it is not money bill, if it is not a money bill, bracket close, written the bill in bracket if it is not a money bill. अगर money bill रहता है तो वो he cannot return that money bill to the, because he is a person with his permission money bill introduced on the floor of the parliament. So if he is giving permission for the introduction of the money bill on the floor of the parliament, then there is no question of returning bill. मतलब मनी बिल जो इंट्रोड्यूस होता है पार्लियामेंट में वो प्रेसिडेंट के सैंक्शन से ही होता है, इसलिए मनी बिल को वो रिटर्न नहीं भेज सकता. ओके, सो रिटर्न द बिल इन ब्रैकेट इफ इट इज नॉट अ मनी बिल, ब्रैकेट क्लोज, फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, or the reconsideration of the parliament, full stop. Write down in last para, next line. However, if the bill is passed again, if the bill is passed again by the parliament, if the bill is passed again by the parliament, comma, with or without amendments, comma, the president has to give his, with or without amendments, comma, the president has to give his assent to the bill. मतलब अगर बिल को अगेन पार्लियामेंट ने पास किया और फिर से अगर प्रेसिडेंट के पास भेजा तो प्रेसिडेंट डोंट हैव एनी ऑप्शन, he is having only option to sign that bill. So पार्लियामेंट एक बार प्रेसिडेंट के पास, मतलब प्रेसिडेंट कैन सेंड that bill only once for the reconsideration of the parliament. So parliament will decide on that case. Parliament may amend that bill as per the directions of the president or may not amend that bill. Okay, so अगर उन्होंने amendment करके भेजा तो भी president को पास करना है, अगर amendment without amendment भेजा तो भी president को पास करना है. लेकिन with respect to the state bill, अगर गवर्नर स्टेट बिल प्रेसिडेंट के रिकॉग्निशन के लिए भेजता है तो प्रेसिडेंट उसको विथहोल्ड करके कितने भी समय के लिए विथहोल्ड करके रख सकता है. लेकिन पार्लियामेंट्री बिल को प्रेसिडेंट जो है
जैसे पार्लियामेंट ने फिर से भेजा तो प्रेसिडेंट नीड टू गिव हिज सैंक्शन. ओके, हाँ, तो दिस इज अ प्रोसेस, लॉ मेकिंग प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट. ओके, सो I feel tomorrow also I need to continue the session of the constitution so that we can finish the constitution section as early as possible. I am taking this section in detail because in examination, NDA is also a tough examination since the examination is conducted by UPSC. तो आप लोगों का एज भले ही कम हो, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होती है वो कम नहीं होती है. एंड अवर टारगेट इज टू फेच मैक्सिमम स्कोर इन जनरल स्टडीज पेपर. इसमें अगर आपके 30-35 क्वेश्चंस करेक्ट आ गए तो 120 + 130 स्कोर आपका यहीं पे हो सकता है. दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस पेपर फॉर आर्ट्स, कॉमर्स और द साइंस स्टूडेंट्स. ठीक है, देखो साइंस वालों को भी मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डिफिकल्ट जाता है. ओके, एंड दिस इज अ सेक्शन, जनरल स्टडीज इज अ सेक्शन which is new for all candidate, right? So if you are fetching maximum possible marks in this section, then there is a possibility to qualify this examination. Okay, chalo. So I stop today's session here only. Thank you very much.